इवनिंग स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग नवरात्रि का आनंद ले रहे होंगे और साथ में अपनी पढ़ाई का भी ध्यान दे रहे होंगे, क्योंकि आपका 12 अक्टूबर को जो एग्जाम है और भी कई सारे एग्जाम्स लगे होंगे आपके, तो इसलिए पढ़ाई के साथ साथ आपको अपने जो फेस्टिवल्स है उनका भी आनंद लेते रहिए, लेकिन अपना जो पढ़ाई का रूटीन है उसको मेंटेन रखिए। और इस टाइम पे मॉनसून आपका रिट्रीट ले रहा है, तो थोड़ा अपना हेल्थ का भी ध्यान दीजिए। बकाया आप लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, बस कॉन्सेप्ट समझने पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे इन सबके नोट्स हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल अच्छे से प्रोवाइड कर देंगे, जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे। बस आपको अपना जो पूरा का पूरा अटेंशन है क्लास के टाइम पे वो बोर्ड पे देना है, और जो हम थोड़ा बहुत चीजें लिखते हैं उनको नोट्स करते जाइए। बकाया आपको पूरा का पूरा जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स होंगे आई विल शेयर ऑन माई टेलीग्राम चैनल। ओके स्टूडेंट्स, so now we will start from the topic where we have ended the previous lecture, that was the judgment of Golaknath का जो गोलकनाथ जजमेंट था वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। आई हैव शेयर्ड विद यू दिस टिल दैट कॉन्सेप्ट। तो गोलकनाथ जजमेंट जो था उसमें क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने एकदम बिल्कुल एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू अडॉप्ट कर लिया था, दैट द फंडामेंटल राइट्स आर सेक्रेड एंड ट्रांसेंडेंटल इन नेचर, कि जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो बिल्कुल कोई भी आपका टच नहीं कर सकता है। इफ यू वांट टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स देन यू हैव टू रिकन्वीन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को रिकन्वीन करना पड़ेगा, फिर से बुलाना पड़ेगा। दैट इज नॉट पॉसिबल नाउ बिकॉज द पर्सन हु वर इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर नो मोर। ओके, नाउ व्हाट विल बी हैपन दैट to neutralize this judgment, the present regime of Indira Gandhi government brings some constitutional amendment acts. What are these constitutional amendment acts which are brought to neutralize the effect of the Golaknath judgment? Now, what are these the constitutional amendment acts? Then after presence of these constitutional amendment acts, what happens? Now we will start from here, and today we will finish the doctrine of basic structure. It is the last lecture in the series of doctrine of basic structure. Now, so what happens to neutralize the effect of Golaknath judgment, to neutralize the effect of Golaknath judgment, to neutralize the effect of Golaknath judgment, Parliament brings certain constitutional amendment. What are these constitutional amendment acts which Parliament brings? These are 24th Constitutional Amendment Act, 25th Constitutional Amendment Act, and 29th. There are many amendments acts which can bring, but we will discuss only these three. ठीक है, because these are relevant in the backdrop of Keswanand Bharti case. What happens under the 24th Constitutional Amendment Acts? Parliament amend Article 13 and Article 368. Parliament amends this. What the Parliament does in the Article 13 and the Article 368? Now we have to understand it very clearly. Please pay the attention only on the board. Don't worry about the notes. I will share you all the notes in my Telegram channel, so you have to understand the concept. What happens under the article? What happens? 24th Constitutional Amendment Act. Article 13 clause 4 has been introduced. What it says? It says nothing of this article
will apply on Article 368. Will apply on Article 360. तो इसका मतलब क्या है? It is they were trying to neutralize here in the Golaknath judgment law, which was in the court understood this law word ordinary law as well as if the parliament brings the constitutional law, both will be unconstitutional, brings the fundamental rights. Here, what the it brings the article, nothing of this article is they are Article 368 giving the immunity to Article 368. Clause 4. So same vice versa. And one thing I also want to share you, which the this Article 368 don't amend the Constitution. It is amendment of the Constitution. So the Constitution here becomes Constitution. Power and proceeding. So these words. Now what happens? To amendments by the 24th Constitutional Amendment. What happens according to the 25th Constitutional Amendment Act? Constitutional Amendment Act introduced. What is Article 31C? If right to implement '39 Clause B. What is the 39 Clause of resources? प्रोटेक्शन ऑफ व्यक्ति के हाथ में सारे के सारे संसाधन, ठीक है, जो एक कैपिटलिस्ट फीचर टू एक्यूमुलेट एज मच रिसोर्स. 39 क्लॉज बी और 39 क्लॉज. तो व्हाट द स्टेट इज डू इफ 39 clause B and 39 clause that law will not be unconstitutional, then constitutional on the ground of violation of Article 4. So it is mentioned in the Article 31 that I taught you the
brought by the first 31C was brought by the 25th Constitutional Amendments Act. So these both are very important. Now we will move further.